So please unmute. Audible? Yes. Baकी का क्या हो? बाकी का है? अरे, कल कुछ डाउट है कुछ? How much days in menstrual cycle lasts for? 28. 20? 8 days. And how many phases menstrual cycle is divided? 3? 3 phases. Ovulative phase. और last luteal phase. Okay. What is the development stage of follicles? क्या क्या बन रहा है? Primary follicles, secondary and okay. What is the function of the corpus luteum? Secretion of progesterone. What is the function of developing follicles? Secretion of progesterone. Okay, then. When is the ovulatory day taking place in the cycle? Which day? Which day? 14. Approximately 14 days. Yes. इसके लिए क्या हुई? What is that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We continue with ahead. One we said is क्या previous slide में था? If the egg is released, egg either will be fertilized or it will be not fertilized. अगर not fertilized हुआ तो menses start. So we talked about menstrual cycle. It is divided into 4 phases: menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase, luteal phase. Menstrual phase where the uterine wall breaks and the bleeding takes place. After that, the uterine wall again start thickening up from the 6th day onwards. Okay. Simultaneously in the ovaries, what is happening in the ovaries? The ovaries start developing. So next stage, that is follicle start developing primordial follicle into primary, secondary, and Graafian follicle. By the time Graafian follicle is formed, it is approximately 13th or 14th day. जैसे Graafian follicle बनेगा, the Graafian follicle ruptures. That is what we say as ovulatory phase. Now, this ovulatory phase, where the Graafian follicle ruptures, what does it releases? Ovum. Okay, अपने लिए ovum, आगे जाके बाद में और आएगा. Right now, ovum. Now, as the ovum is released, the left of Graafian follicle, that is a fluid-filled Graafian follicle, which is a yellow color fluid-filled, regresses to form a structure known as corpus luteum. What is the importance of corpus luteum? It keeps on shrinking day by day. So what is it producing? Progesterone. So by the time 26-27 day के आसपास, it will completely shrink and it would simply vanish. Just before it shrinks, and there is a dot left, okay, not required for syllabus, just for knowledge. So अपन ने draw किया था something like this. कि ये बड़ा corpus luteum है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर a large point where somewhere it remains a scar and then it vanishes. So the point where it remains a scar is referred as corpus and beacons.
Albicans is the rudimentary part of the organism, is the small scar. Okay, and then it will simply completely degenerate. यहाँ तक किसी को doubt है. Okay. Now we come to the important part, that is fertilization and post-fertilization part. So now children, fertilization and post-fertilization part पे okay, I hope everybody can see the diagram. Okay, so now children, what is happening in the part is I'm drawing again the same diagram strong over here. Egg is released. So over here, it releases the egg. Now, in this case, we draw the egg with the blue color. So यहाँ पे egg is okay. It has entered into the fallopian tube. Okay. Now, what is the egg release? अभी आपने आंसर दिया 40th day. पिछले menstrual cycle का कौन सा डे? 40th day, the egg is released. Whatever I'm writing in blue color is with respect to menstrual cycle. इतना याद रखना. Now, 14th day पे egg release हो. Now, imagine at that point the sperm is available. It's a probability. During that time the sperm would available, so fertilization takes place. यहाँ पे the sperm is available at that time and it fertilizes. So what is fusion of the male gamete and female gamete known as fertilization? What does it forms? Zygote. तो यहाँ पे first क्या बनेगा? Zygote. Okay. Husband, वहाँ पे भी लिख रहा हूँ, simultaneously मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ. So we come to know. So first, egg cell, that is egg nucleus. Egg cell fuses with the sperm nucleus of sperm to form what we say as zygote. How much cell is a zygote? Let's look at zygote. एक cell, दो cell. Zygote. So why? दोनों मिला के तीन होता है. हाफ वो अलग हुआ, वो न्यूक्लियस के पार्ट हुआ. सेल बोल रहा हूँ, तो one cell plus one cell. Zygote combines to form again a single cell only. So life starts as a single cell in all organisms. चाहे वो unicellular हो, चाहे वो multicellular हो. Life always starts as a single cell, that is zygote. Now, where is zygote formed? Fallopian tube. Then imagine करना 14 day पर release हुआ है. उसी दिन पे वहाँ पे fertilization हुआ. Egg, I said ovulation day बोला जाता है, पर वो सिर्फ second का काम है. So 1 मिनट में egg अंदर आ गया और उसी टाइम पे sperm available था. So fertilization occurs, वो भी शायद 4-5 मिनट का होगा. And zygote is formed. तो zygote कौन से डे पे बना? उसी दिन पे बना zygote भी. Zygote is formed on the 14th day. Now, चल 14 day पे zygote बन गया और now 14 day पे the zygote is formed. Now pregnancy के हिसाब से zygote बना, मतलब can I say the lady is pregnant? हाँ ना? वो उसकी बात का प्रोसेस. When I say pregnancy मतलब क्या? zygote बना मतलब she is pregnant ना? Life उसके womb मतलब body में बन गया. Zygote is a life ना? Can I say it's pregnancy? Yes. So
तो अब जाइगोट बना, ये प्रेगनेंसी का कौन सा डे होगा? गुड, फर्स्ट डे. So green color marks as a pregnancy case. Blue color marks it as a cycle case. Now children, zygote is a single cell. It undergoes a process known as cleavage. पहला हुआ fertilization, एक प्रोसेस हुआ, अब सेकेंड प्रोसेस हो रहा है cleavage. Now what is cleavage? Cleavage is nothing but, boys, are you able to see the writing part? Yes, sir. कुछ ज्यादा उस सेट तो नहीं है ना? No, sir. ठीक है. So cleavage. Now what happens in the cleavage? The zygote, which is a single cell, will undergo repeated mitotic division. Mitotic means chromosome number remains same. Only it won't divide. So here repeated mitotic division takes place, but this division doesn't separate out the cell. Only cells are added up. So how does they form? It undergoes first division, 2 cells, 4, 8, 16, 32, 64. मैं उसे सर को मैथ नहीं आता, के आगे रोक नो सर. I purposely stop at 64. Reason. If you see the diagram over there on the board, okay, ये रहा ओवर रिलीज होना राइट हैंड साइड नीचे, फिर स्पर्म आ गया, zygote बन गया यहाँ पे, so there is fusion and zygote form. This zygote undergoes cleavage, so on top it is cleavage. Then यहाँ पे ना जब zygote cleavage आता है इस पार्ट पे, okay, you can say it is like a primary child, primary class के बच्चे, फर्स्ट से लेके 7 तक शायद बच्चे क्यूट ईमानदार होते हैं, क्योंकि कुछ भी बोला सुनते हैं. 8, 9 में थोड़ा 10 में तो exactly same thing over here. And the divide first division पहला zygote ऐसे, अब division occurs perpendicular. पहला ऐसे, उसका सेकंड ऐसे, थर्ड उसके perpendicular, फोर्थ उसके perpendicular. Every time the division occurs, it is perpendicular to the previous. Okay, पर ये 64 cells तक ये रूल फॉलो हो जाता है. Before the primary था, before क्या है secondary. अब वो haphazard divide. It starts haphazardly dividing to the point that forms a mass of cell. वो circle मतलब cells है. Okay, so it's a mass of cell. Now आप पे देखो क्या लिखा हुआ है. This mass of cell is referred as morula. Okay, now why the name morula? So morula जो होता है, it's a fruit of a mulberry tree. Mulberry tree का fruit का part है morula. Okay, अगर अपने लिए simple example देना है, तो you might have eaten सीताफल. सीताफल देखा है ना? छोटे-छोटे cells होते हैं उसके ऊपर. तो ये almost वैसे दिखाई देता है. छोटे-छोटे cells. Okay, morula का fruit पे ऐसे दिखाई देता है. So it resembles the morula, the mulberry tree का fruit, which is morula. इसलिए इसको नाम दिया गया है morula. Okay, this morula undergoes further slight arrangement of the layer, outer layer. कि उनकी जो layer of cells होते हैं, they redistribute themselves in such a way to form the most important layer, most important stage, blastocyst. I think diagram में शायद यहाँ पे you can see the cells have arranged themselves. ऊपर नीचे और बीच में cavity create करता है, और that stage is known as blastocyst. It is generally differentiated into inner cell mass and outer cell mass. Not required at your level. Which one? Blastocyst, yeah, what we say as blastula. आपको blastocyst याद रखना है, not blastula. Now, what's the difference between a morula and a blastocyst? To understand that, a simple example is
मान लो ये यूट्रस वॉल है, मेरे हाथ में बुक है जिसे यूट्रस वॉल, एंड आई टेक दिस एज अ जाइगोट। ओके, अगर मैं जाइगोट के यहाँ पे रख रहा हूँ ये नीचे जाएगा, फिर जब जाइगोट यहाँ पे बनता है इट इज कीप ऑन रोलिंग डाउनवर्ड्स, जाइगोट रोल हो रहा है, रोल होते हैं साथ में वो डिवाइड भी, सो इट इज रोलिंग एट द सेम टाइम डिवाइड। सबसे जब मैंने यहाँ पे रखा क्या हुआ, दोनों के नीचे आ गया। अब मान लो मैंने इसी पेन को या मार्कर को अकॉर्डिंग टू फेविकॉल मैंने कीप इट ओवर, नाउ व्हाट, थोड़ा एक आध सेकंड और फिर वापस चिपक जाएगा, ओके, बिकॉज इट हैज अ ग्लू नाउ टू गेट टू द पार्ट। दैट्स एग्जैक्टली सेम थिंग, जो मॉड्यूला होता है इट्स लाइक द मार्कर जो विदाउट फेविकॉल है, बट जैसे प्लास्टुला बन जाता है, जो आउटर लेयर बन जाता है, it has an arrangement of such a way that now it facilitates it to stick to the wall of the uterus. So you can, मतलब सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ, it become like a फेविकॉल की तरह काम करता है, तो फेविकॉल की तरह से वैसे वो it gets stuck to the walls of the uterus. So technically the blastocysts get embedded in the wall of the uterus, and this process of embedment of blastocysts in the wall of the uterus results into the formation of the first connection between the mother and the growing embryo, that is placenta, and the process is known as implantation. Now, children, as you proceed with the different age groups, अगर आपने लोअर क्लासेस में कभी पढ़ा होगा ये वर्ड, तो वहाँ पे लिखा होगा the embedment of the embryo in the wall of the uterus. मतलब उस लेवल पे बच्चे को प्लास्टोसिस को समझ में नहीं, उसके लिए एम्ब्रियो समझ में। When we are studying, we are specifying embedment of the blastocyst in the wall of the uterus is known as implantation. Am I clear, everybody? So where does the implantation takes place? Right? Okay. अब चलन वापस ध्यान देना, यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट कौन से डे पे बना, 14, साइकिल के सबसे 14 डे पे। अब जाइगोट डिवाइड होते होते it has come to the modular stage. Modular stage somewhere over here. ये बन गया आपका modular. Blastocyst somewhere over here. Okay. And मान लो चलो embedment यहाँ पे हो गया. So in the time it forms the blastocyst and embedment, it almost takes यहाँ पे 9 day, यहाँ पे 10th day. कि 10 दिन लगते हैं उसको, तो अकॉर्डिंग टू साइकिल कितना 14 प्लस एम्बेडमेंट होके कितना हुआ 24 डे पे क्या बना प्लासेंटा बना। अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी कितना दिन होगा 10, कितना समझना है नाउ चल। So now the embedment has taken place. It has resulted into the first connection between the mother and the growing embryo. That is placenta formation. Now, what is placenta? So, इस पार्ट को मैं enlarge कर रहा हूँ. So from the maternal side, मतलब uterine wall से, there are finger-like projections going in. And from the embryo, it is from the blastocyst. There are finger-like projections. Both these villi-like structures get interlocked among themselves. This interlocked villi forms a disc-like structure, and this disc is referred as placenta.
Any doubts up here? Now, what's the function of placenta? It provides nutrient and oxygen to the body of the It provides nutrition and oxygen to the placenta. blastocyst. To the blastocyst or to the growing embryo. Embryo. Blastocyst हो गया खत्म, embedment हो गया, blastocyst के आगे आप आगे बढ़ रहे हैं. To the growing embryo. Okay. Now the moment it gets embedded, it says now embryo. So even it is providing nutrient from where to where? Mother From the to mother embryo. to the growing embryo. Second, it provides from third function. सब कुछ मम्मी से बेटे में जा रहा है यार, बच्चे से कुछ नहीं जा रहा. So obviously it removes waste from the embryo to the mother side. Okay, but then if the blood going into the embryo, if the mother blood going into the embryo part, जाना चाहिए? No. नहीं बना, पर चलन यहाँ पे सबसे important. The mother blood vessels carry the nutrient, oxygen only up till this villi. तो अगर मैं यहाँ पे रेड कलर में ब्लड वेसल दिखाता हूँ मम्मी की साइड से, ये ऐसे. The mother blood vessels never cross the placenta and go on the other side. Any reason? Is it? Whatever things have to move in and out, there is only one process which occurs. It is via diffusion. Mother blood will never go on to this side. Simple reason है. एक जो basic reason होता है. थर्ड, अगर मम्मी का ब्लड वेसल अगर बच्चे के उसमें गया, जब बच्चा गिरा तो क्या है, वायर का शॉर्ट आउट करके कट करके बाहर निकालना है. ये मम्मी का ब्लड वेसल है, इसको रोक रहा है. कट करके सील करके फिर बच्चे को बाहर निकालना. Is it possible? No. एक तो ये पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी, सर मम्मी का ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, बच्चा भी पॉजिटिव होता है, दोनों का ब्लड ग्रुप अलग होता है कि नहीं होता है? आर वी एग्जैक्टली सेम ब्लड ग्रुप? नो, अपना कॉम्बिनेशन में आता है. सो मम्मी का अगर ए ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का भी ए ब्लड ग्रुप होना चाहिए क्या? नहीं. तो सेम ब्लड का ग्रुप, ये भी एक रीजन है. पर ये सब बकवास है. The main reason कि why mother versus doesn't go on with, because एक तो बच्चे के इसमें ब्लड वेसल नहीं है. सर बच्चे के इसमें नहीं है सर, तो मम्मी कराना चाहिए ना देने के लिए, बट वहां पे नहीं कर सकता. बिकॉज व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी? 120/80. प्रेगनेंसी में थोड़ा हाई होता है. ब्लड प्रेशर ऑफ द मम्मी इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द बेबी, मतलब नॉर्मल केस. 120/80 या 130 भी थोड़ा आगे जाएगा तो उस ब्लड प्रेशर के रेट से अगर इस सेल्स के अंदर ब्लड गया जो अब तक बने भी नहीं है, बन रहे हैं, okay, so blood going at that tremendous pressure will have दिवाली धमाका. okay, जिंदगी में कभी लाइफ ओरिजिनेट होती नहीं. we would have never seen the sunlight, okay, nor we would have usually evolved also of this condition. Then it passes nutrient, oxygen, removes the waste only in terms of diffusion. And with this, it also passes on the antibodies. वो अपने काम करें. इतना समझ में आया? Good. साइकिल का कौन सा दिन है? 24. So now the lady is pregnant. 24 day पे she is having this part. Okay. Placenta हो गया, finish. अब the days goes by. 25th, 29th day आ गया. What is expected? Sir? कब?
29 डे के आसपास न्यू साइकिल होना चाहिए. ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रेगनेंसी कितना दिन हुआ? 24th का 10th था. हाँ, तो फर्स्ट 14 डे पे फर्स्ट डे था. 24 डे के आसपास इम्प्लांटेशन हुआ, मतलब फर्स्ट टू 10 डेज हुआ है. 10 15 डे हुआ प्रेगनेंसी के हिसाब से. अब 29 के आगे और 4-5 दिन आगे अपन पकड़ते 6 दिन के कितना हुआ? 35. Okay. Now still menstrual cycle is not occur. Message नहीं आई है. So what will go into the mind of the lady? मतलब अगर she is married and they are planning for a baby, obviously one thought will come है. अगर भी pregnant, क्या मैं pregnant हूँ? हाँ या ना? Okay. So now 30 मतलब cycle comes plus minus होते रहते हैं. So now plus minus हुआ. She expects के plus minus 2-3 दिन होता है. Very rarely ऑफिस का उसका बहुत ज्यादा नहीं होता. अब cycle has been delayed for almost 6 to 7 days, and now she is having a thought process. We are planning for having a baby. Baby, मैं शायद pregnant हूँ. हाँ. So now what? She will test for pregnancy. So which test? Good. Pregnancy test. क्या करते हैं pregnancy test? So in the pregnancy there is a small kit. Okay, the urine of the pregnant woman is taken and put on that spot where there is ऐसा kit है वो, और यहाँ पे चलन line होती है, the red line हो गई. The moment you put a urine drop over here, एक line red color का already है, उसके बाजू में immediately एक red line आ जाता है. A new red line is formed. Okay, if the line arrives, it means she is pregnant. If the line doesn't come, it means not. अगर बहुत पेंड है तो repeat करना, मतलब not sure. Okay, so now the red line is appeared. What is that meaning? Pregnant. So my question to you now, the answer is, okay, which hormone is tested in that urine? अच्छा नहीं प्रोजेस्टेरोन या कोई और? प्रोजेस्टेरोन, श्योर. डायग्राम ध्यान देखना. चल, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे ज्यादा हुआ 24 दिसंबर यहाँ पे आएगा. बाकी के टाइम पे तो प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट है, कम है पर प्रेजेंट है. तो अगर हर एक गर्ल का यूरिन सैंपल लिया रिस्पेक्टिव ऑफ हर एज ग्रुप, मतलब आफ्टर मेंसेस एक बार शी इज कम टू प्यूबर्टी, तो उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल पॉजिटिव ही दिखाएगा. मतलब हर एक लड़की प्रेग्नेंट है, हो गया. इंडिया में तो मम्मी डैडी को सुसाइड करना पड़ेगा कि शादी के बाद प्रेग्नेंट. नो. नाउ व्हाई लाइक दिस? बिकॉज़ ये एक रॉन्ग मिस्टेक होता है. बुक में लिखा है प्लासेंटा का एक फंक्शन, ये 3 फंक्शन हुए. One of the most important function is placenta also acts as a temporary endocrine gland which secretes progesterone. के ऑब्वियस है. अब इसका फंक्शन क्या है? Then 24 डे पे बन गया. So what does secrete now? Progesterone. 24 डे पे कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया? और वो छोटा आ गया एक साइड पे.
Okay, so ये progesterone इस corpus luteum को information देता है, भाई मे भी होगा, okay, दोनों का इसका quantity ज्यादा है, so combined effect में the quantity remains high and it signals the corpus luteum, hold, wait, do not move further, अब regress नहीं हो, so this will stop over here, ये नहीं बने, अब वो इसी stop पे रुक गया and both of them continue secretion of progesterone. So progesterone level will be always high. जब तक progesterone level high है, uterine wall remain intact. Uterine wall remain intact, pregnancy would, but conditions applied. So then implantation हुआ, progesterone भी बना, but hormones बनते कैसे? Basically depends upon your food intake and everything. If the lady genetically is having less hormone of progesterone, उसके body में progesterone कम बन रहा है. After pregnancy also इसका ये भी कम बन रहा है. दोनों का combined effect भी कम ही. And corpus luteum is not able to stop the further regrowth. मतलब वो continue करेगा. So what will happen? भले implant हो चुका है, but after 29 days, 30 days का असर क्या होगा? The progesterone level has gone down and the uterine wall will break. She has undergone natural miscarriage. Then 90% of the women undergoes miscarriage. उनको पता भी नहीं चलता है पर वो miscarriage हो चुका होता है. Because for her it would be a normal regular cycle. 20, 39, 29, 30, 31st days पे आसपास आ गया तो कर चाहिए. तो 2-3 दिन आगे कह सकते. But for her it would be a normal cycle. वो पता भी नहीं चलता. Am I clear? But question remains same. जब progesterone secrete हुआ, वो टेस्ट नहीं कर सकते. Because placenta secretes one more hormone जो आपकी बुक में नहीं है सिलेबस में, but you should know because फिर नहीं तो लिख क्या होगा? The progesterone टेस्ट. No, it is. चलो लिखते हो गया ऐसे लिखा. H small CG capital. It is standing for human chorionic gonadotropin hormone. Chorionic gonadotropin hormone. Now, chorionic and gonadotropin. Chorionic is basically the term from which the placenta is formed. So placenta is made up of 6 layers. हमें क्लास में पढ़ो, उसमें से एक लेयर chorionic होता है. So chorionic gonadotropin इनका यहाँ से किस लेयर से बनता है? It's below human chorionic gonadotropin hormone. चलिए कौन बनाता है? placenta कब बनेगा? जब implantation होगा. Implantation कब होगा? Placenta बना. मतलब इन शॉर्ट प्लासेंटा कब बनना? जब प्रेगनेंसी रेट हो आया ना. अच्छा, when the test is done, अगर थोड़ा भी SCG होगा तो पॉजिटिव दिखाएगा. और SCG आया मतलब क्या है? She is pregnant. Am I clear? Okay. And सिर्फ ये false pregnancy भी होता है, it's not required to level, but this is what it is. Again we come back to the cycle now. थोड़ा और एक्शन करेंगे. अब उसने कौन से डे पे टेस्ट किया? 35. अब चलन अपने लिए दिए, अब इसका कोई वैल्यू नहीं, अब अपने लिए इसका वैल्यू. So she tested the kit on 21st day of pregnancy. Okay, 21st day को उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया. Okay, रात को टेस्ट करी, रात को डॉक्टर को मिलता है समान टेस्ट. Okay, so now she's excited. Who is the right person to confirm the pregnancy? The doctor. Okay, so obviously she'll go to doctor next. Once a day, okay, doctor very calmly sees the test report. देख लेता है, और उसको वापस बोलते हैं वापस एक बार टेस्ट करते हैं.
टेस्ट कर लिया, पॉजिटिव निकला, डॉक्टर बड़े खास, ओके कांग्रेट्स। जितना उसको एक्साइटमेंट है उतना डॉक्टर को बिल्कुल नहीं। ओके नाउ डॉक्टर सेज ओके थोड़ा ब्ला क्वेश्चंस का आपका साइकिल आया, सब कुछ आया। अब उसके बाद they will say after maybe 10 days या maybe 2 weeks के बाद you need to undergo sonogram. So after 14 days कितना हुआ? 35 मतलब 10 days या 12 days के बाद ऐसा ना 31 और 35 के बीच के रेंज। सोनोग्राफी में क्या होता है? सोनोग्राफी में कितना डेवलप होगा ये नहीं पता चलेगा। There you see the certain structure, इसको एम्ब्रियो सैक, एपोलन सैक बोला, एम्ब्रियो सैक बोला जाता है, फिटस बोला जाता है, and most important वहां पे हार्ट बीट दिखाई। अगर हार्ट दिखाई दिया तो इट्स द फर्स्ट इंडिकेशन कि 30 डेज क्रॉस हो चुका है। हार्ट इज फॉर्म एग्जैक्टली आफ्टर 30 डेज। 30 डेज के बाद हार्ट बनता है, 31st डे पे आपका हार्ट बनेगा। ना आपने टेस्ट किया 34 डे के आसपास तो हार्ट दिख रहा है शायद। अगर हार्ट दिख रहा है तो इट इज बीटिंग मच फास्टर 200 प्लस। अगर पेस बहुत कम है, the heartbeat is very slow, doctor will advise complete bed rest. Okay, give medications, complete bed rest. They will say her to repeat sonography after 7 days again. 7 days के बाद repeat किया, there are two options. What are the two options? Heartbeat becomes normal. Normal मतलब उस level पे fast. Second, the heartbeat stops forever. What does it indicate? Again, the growth has not continued. The mother has lost the baby. So it is at the end of the day, sonography confirms क्या pregnancy positive हो सकता है, पर वो growth हुआ है या नहीं हुआ है, ये सिर्फ सोनोग्राफी का। जब 1 month में हार्ट बन जाता है, उसके बाद 3 months तक हम उस एम्ब्रियो को एम्ब्रियो ही बोलते हैं, referred as embryo, the mass of cell as embryo. After 3 months, referred as fetus. Why? What is fetus? What's embryo and what's zygote? Zygote is one cell. Embryo, a mass of cell, multicellular. Fetus, mass of cell, multicellular. The difference क्या? Something else. Something else. Still nearer to it. Still nearer to it. Then when a growing embryo first resembles like a human being, पहली बार वो human being की तरह लगता है, then it is referred as fetus. That's the proper definition. Yeah, when an embryo resemble like human, it is referred as fetus. वरना उसको fetus. Now, so it will take 3 months for it to form a fetus. चौथे महीने में reproductive systems, then hands, legs तो सब कुछ बन चुके होते हैं, पर 3 months के आसपास वो मतलब it is almost 3 months में it is a peanut size, इतना सा होता है। अब 3 months में इतना है, अब वो साइज बढ़ा देंगे। 4th month में reproductive systems, then your nervous system, then your eyes, then your ear, इस sense of develop होना चालू होता है। 5 month के end में बच्चा देखना और सुनना चालू कर देता है। मम्मी के womb दिखता क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ bright specks। जैसे आप आग बंद करके दबाते हैं ना, तो बीच में से थोड़ा स्पेक लाइट का, ब्राइट लाइट का, वैसे उसको दिखा देगा, दिखाई कुछ नहीं देगा, पर सुनाई सब कुछ देता है।
No. He is able to hear the sound which is loud and clear. Okay? वो 3 days में लात मारता है. All is well, बोलो all is well. Okay? सर सुनाई देता है? Yes. तो ऑर्डिनेशन का जोर से बोलोगे तो बच्चे को सुनाई देता है. And it has been proved long back also. अपने पैथोलॉजी में बोला अभिमन्यु ने मम्मी के मुंह में चक्रव्यूह सुन लिया आधा. Well, that proves that you were able to hear. Okay? Same thing is simple है. We can prove it now also. जब मम्मी के मुंह में बच्चे को सुनाई देता है. Okay? अगर मैंने मान लो आपके पैर के आप पे बम लगाए, पता नहीं आपको पर बम लगाए. Okay? अब हम बस हुआ. What will be your reaction? बॉम्ब मतलब टाइम बॉम्ब नहीं रे बाबा. हमारा दिवाली का बॉम्ब लगने बोल रहा हूँ. दिवाली बॉम्ब बताया. कूदेंगे और something like this और डर के मारे भाग बैठोगे. आया ना. सर अगर आपको इतना बड़ा साउंड सुनाने के बाद डर जाते हो तो जब वही साउंड वो बच्चा सुन रहा है which is loud sound, what would be his reaction? वो भी कूदेगा. कूदेगा मतलब क्या? पीरियड्स में लात मारता है. And वो रिएक्शन जो दिखा ना साउंड लाउड साउंड के लिए जो अपन दिखा रहे वही बच्चा भी दिखा रहा है. That is how it reacts. अब 6 महीने मतलब डेवलपमेंट हुआ, 7 month में बच्चा is ready, but he is only this much. Full ready, सब कुछ रेडीमेड पॉलिश सब कुछ हो गया. के इतना सही है कि वो एक ही काम करता है, सोता है, जागता है और फिर कर देता है. के बच्चा स्विमिंग मम्मी के मुंह से सीख के आता है. देखा जाए तो womb is surrounded with water. Okay? So वहां पे वो सो रहा है और घूमते रहता है. Okay? अब what happens after this? 7 महीने हो गए. अब 7 महीने के बाद अब वो प्रोटीन डाइट पे जाता है. It is only increasing in size. अब वो हट्टा कट्टा होने के चक्कर में रहता है. Okay? अब 9 months हो गया. So what is that period known as? Gestation. Good. Gestation period. Gestation period is the time required for the development of the baby. Okay? For the growing embryo. From the zygote to in the time it is born out. That is known as gestation period. Human beings में ये 280 days. That is approximately 9 months. The longest gestation period is of any mammal. Mammal में बताओ. हमारा the longest being the elephant, almost 2 years के आसपास, and the shortest being the opossum rat, which is 3 days. So you can see the extreme corner. हम उसके बीच में आते हैं 9 months के आसपास. So 9 months में बच्चा full pack box में डिलीवर रिबन जिसका वो हैप्पी बर्थडे का आता है वैसा रेडी है. Now what leads him to come out? मन होता है क्या? जगह नहीं अच्छे से वाटर का बलूंदा फट गया. It's a bad burst. Okay. Okay, what the bad burst? No. Then we continue. I'll leave 5 minutes early. Okay. The simple है. मैं आपको एक गरीब बैग में डालूँ. गरीब को ना. Okay. तो अरे go on. पहले रिस्पॉन्ड नहीं करता. वो तो अभी भी नहीं करता. पहले के दूर की बात है. सिंपल एग्जांपल. मैंने आपको इसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म लगाया. बेहोश हो गया. मरनी है. बेहोश हो गया. अकॉर्डिंग टू गरीब. गरीब के एंड को ना माउथ को मैंने बंद कर. ओके. 4 घंटे का उसका इफेक्ट रहेगा. 4 घंटे उसके बाद फिर मैंने मार के सन का रख दिया. 4 घंटे के बाद उसको होश आएगा. सोना होगा. हिलेगा. तो स्ट्रगल a lot. Try to open. Then 9 months में
there is the initiation of fetal reflex. अब it's completely ready. अब वो suffocation चालू करेगा. ये reflex चालू होंगे. तो जैसा बनीगर में अपन वैसे वो भी अपना vigorous push करेगा. Which will lead to uterine contraction heavily and then वो 3 days का मुना push. Okay, so वो uterine wall is contracting heavily and the baby will be delivered out along with the placenta and everything. Placenta पहले बंद है, first connection. फिर जैसे डेवलप होता है बच्चे के इसमें तो ये थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा, प्लासेंटा और बच्चे के बीच में बन जाता है umbilical cord. So the connection between the fetus and the placenta is umbilical cord. Okay, and then the child is delivered out. इसको technically बोलते हैं parturition. Okay, the ejection of the baby out of the fetus out of the mother's womb is known as parturition. And the time period for its development is known as gestation. Am I clear? Achlan, हर जगह पे नमूने होते हैं ना, तो कई बच्चे 9 months तक वेट नहीं करते, ओवर एक्साइटेड, हाइपर एक्टिव और भी बहुत कुछ बोल सकते हो. So then 7वें महीने में डेवलप पूरा नहीं हुआ है, but due to some reason it would initiate fetal reflexes and it comes out. इसे अपन premature बच्चा भी बोलते हैं. लगता है ये देख के कुछ नहीं होता. The premature baby, sometimes it is said that it may have some abnormal, but ऐसा नहीं कि abnormal होगा. It is put in an incubator. Okay, it is only thing is risk level is very high. Survive करेगा या नहीं करेगा. Okay, but it is absolutely fit and fine. Okay, you can see a very common example myself. Okay, premature and that took 2 months of premature, not even 7 months, 6 months and so on and so on. तो कोई डिफरेंट लग रहा है, हो सकता है पता नहीं, but well, so that's a part where premature baby can also do this. Okay, so this is all about the pregnancy. Now open your books. अब books में चलन ध्यान देना. पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में इम्प्लांटेशन दिया हुआ है, प्लासेंटा दिया हुआ है, जेस्टेशन दिया हुआ है, पार्टुरेशन दिया हुआ है. मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, इनफैक्ट कुछ ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो. प्लासेंटा का फंक्शन न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन रिमूव्स वेस्ट, एट द सेम टाइम इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. आपको प्रोजेस्टेरोन लिखा काफी है, डू नॉट रिक्वायर एस्ट्रोजन लिखा चलेगा, पर प्रोजेस्टेरोन लिखना इंपॉर्टेंट. देन चिल्ड्रन दे गिवन यू प्लासेंटा का फंक्शन दिया है नीचे हुए, तो अपन ने वही का एक्सप्लेन किया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ऑलरेडी अपन ने पहले इसमें डिस्कस कर दिया था. देयर आर 4 phases and not 3 phases: menstrual, follicular, ovulatory and luteal phase. Well, last thing before I conclude the part, ये जितना भी अपन ने बोर्ड पे लिखा, बोर्ड पे पढ़ा, is it sir 14 day पे एग्री होता है, 28 day पे इधर आएगा, 24 day पे इधर आएगा? No, it is all plus and minus. Then this plus and minus में it always depend ना क्या ओवम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या ओवम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, वो भी होता है. पर ओवम जब यहाँ पे आता है तो it's like ovum is a girl side, तो आप उसको गर्लफ्रेंड मानते हैं. It will wait over there for boyfriend. boyfriend कौन होगा? Sperm होगा. अब ovum remains over there, waiting period. लड़कियों में वेटिंग पीरियड बहुत वैसे भी कम होता है दिमाग, तो वैसे भी 3 दिन तक वो होल्ड कर. तो फॉर 3 days इट विल वेट फॉर द बर्थ. 3 दिन के बाद पेशेंस खत्म हो गया. ओके, हेल्प विद द बॉयफ्रेंड, आई विल मूव ऑन नाउ. 3 दिन के बाद द egg starts rolling down and menstrual cycle will occur. अगर उस
के बीच में अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन यहाँ तक हुआ तो इट इज कंसिडर्ड एज गुड. अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आया, अगर लेट फर्टिलाइजेशन हुआ तो देन there is a risk factor. Reason, ओवम जब यहाँ पे आता है ना, it is almost like no, it is a उसका एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने के चक्कर में, और वहां पे आके वो फर्टिलाइज होता है. सो इट समटाइम हैपन क्या वो बच्चा एबनॉर्मल हो, नॉट प्रॉपर्ली फॉर्मेशन, ये इशू. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चल मॉरला यहाँ पे बना, ब्लास्टोसिस यहाँ पे हुआ, but again चलेंगे अगेन प्लस एंड माइनस दिस हिसाब से. कभी कभार मॉरला यहाँ पे बन गया, ब्लास्टोसिस यहाँ पे बन गया. ब्लास्टोसिस वहां पे बनेगा तो क्या होगा, वहां पे एम्बेड हो जाएगा. होता है चिल्ड्रन, इसको टेक्निकली बोलते हैं एक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी. अब पुराने जमाने में चिल्ड्रन देयर वाज नो ऑप्शन, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ओके, हार्मोन वगैरह सब कुछ बनेगा वहां पे, शी वुड आल्सो मिस सम दिस वन साइकिल्स, बट प्रेगनेंसी राइट जगह पे है, रॉन्ग जगह पे. So after some time, find the development takes place for the fallopian tube burst. The fallopian tube is not uterus, so expand करता है. That is not a conducive environment for the embryos. तो वहाँ पे, but the fallopian tube burst. अगर ज़्यादा ये हुआ तो she may die या पूरा ये सब कुछ निकालना पड़ेगा. And इसके लिए today it is very important. सबसे पहले सोनोग्राफी किया है. एक है कि नहीं प्रॉपर, दूसरा जगह इधर हुआ है कहीं यूट्रस में हुआ, इधर हुआ है तो ठीक, इधर हुआ, डॉक्टर विदाउट डिले इमीडिएटली अबॉर्ट इट so that pregnancy would not continue. Am I clear to everybody? कोई डाउट है? I'm giving you 2 minutes. शांति से बोल के देखना, कुछ लग रहा है अभी भी पूछना है तो वरना आगे बढ़े. Shall I go ahead? Okay. So go to your experiment. Very small part left. First is reproductive health, then sexually transmitted diseases, population control, and next is contraceptive method. सबसे पहले जब यहाँ पे एक्सप्रेशन मुझे सिर्फ नीचे का पार्ट करना है, ऊपर का पार्ट एक्सप्लेन नहीं करना है. तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव है, लोग इसमें पढ़ागा व्हाट इज 9th स्टैंडर्ड इट्स disease chapter. Yeah, divided 12. So what is a healthy person? How to define a healthy person? A person is physically, mentally and social well-being is what I mean by a healthy person. Now what do I mean by reproductive healthy? A person who is physical, mental, everything is there. उसके अलावा a person who is capable of reproduction or is free from reproductive disease etc. Then I would say him as reproductively healthy. मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना ये reproductive healthy. He has to be capable enough to continue with generation, but at the same time he should be free from any form of diseases, reproductive diseases. Then I would say him as reproductively healthy. Now उस part में चलो reproductive healthy में they given you is the sexually transmitted diseases. Now in this case के पास हो ना एक मिनट ना के बाद बता. And वहाँ पे एक reproductive health basically implied ability to have responsible, satisfying and safe reproductive life. Responsible मतलब they should be able to understand कि मुझे बच्चा कब चाहिए. ऐसे नहीं है पुराने जमाने में
बच्चा फैक्ट्री के साथ हर एक साल में एक बच्चा पैदा हो रहा है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मम्मी को हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. यू कैन सी योर ग्रैंड पेरेंट्स के 5-5 6-6 भाई होते थे. Okay? Some of them, not always, but most of them. Then reproductive as well as the freedom to decide if, when, and how often to have children, and access to effective and affordable methods of family planning. Effective and affordable, it has to be in the limit of the poor people also. ऐसे नहीं क्या मेथड है तो सिर्फ अमीर लोग ही सुनते हैं और poor people नहीं, ऐसा भी होना चाहिए. Also, we should have healthcare services available to enable women to go safely through pregnancy and childbirth and provide couples with the best chance of having a healthy infant. Until date, India में अभी भी there is lot of people pregnancy में ही death होती है, either of the mother or the baby. Reason or no proper medical facility. अगर न्यूज देखते होंगे तो शायद लास्ट 15 दिन में ही एक न्यूज थी पालघर में ट्राइबल एरिया में a lady has lost her twins in pregnancy because medical facilities are not available. So the hospital itself is too far and they need to take her from the mountainous area to get back to the road. Hospital तो दूर की बात है. That is what the problem is. So WHO people guidance consider reproductive health as a fundamental human right. Next is STDs. Now what is STDs? Sexually transmitted disease, also known as vulnerable disease. इसको VDD बोलते हैं. Vulnerable या the sexually आपके लिए STDs ही बोलोगे. Sexually transmitted disease. अच्छा वहाँ पे ध्यान देना. Second point, some common STDs are gonorrhea, syphilis, viral infections like warts and AIDS. Gonorrhea, syphilis are bacterial infection. आपको उनके नाम causative agent नहीं चाहिए, सिर्फ नाम याद रखना. And warts and AIDS are again viral diseases. अब इनमें से 4 में से कौन सा सुना है? और कोई AIDS. Now, चलो वहाँ पर देखना symptom include body sensation and urination, lethal discharge, liver disorder, and diseases are curable. However, other diseases like AIDS which are uncurable. अच्छा सबसे बड़ा look जो है gonorrhea, syphilis, and warts are curable diseases. Okay, to a certain extent. When I say to a certain extent, मतलब क्या? Then लास्ट 1 ईयर कोविड के इसमें थोड़ा कम हुआ, पर कोविड के पहले अगर आप टीवी देखते थे तो टीवी पे गवर्नमेंट की एड्स आती रहती, पोलियो एंड ऑल दिस, यू नो, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एजुकेशन, मास एजुकेशन. सर एक एड आता था, यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट एड बिकॉज़ यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एड. पर सर वहां पे एक एड आता था जहाँ पे एक बंदा वाइफ के साथ क्लिनिक में आ रहा है एंड इज जस्ट नियर टू द डॉक्टर्स क्लिनिक. और वहां से अरे मुझे मीटिंग है, आज जल्दी फोन आया, बॉस ने बोला ये होगा, तो हमेशा क्लिनिक से भाग जाता. ओके, डॉक्टर सी फ्रॉम द मेरे को हमेशा वो भाग रहा है एंड द वाइफ का जवाब. सो व्हाट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द पेशेंट इज कमिंग, डॉक्टर स्टैंडिंग देयर सेल्फ कैचिंग होल्ड दैट ट्रस्ट. भाई बोलेगा नहीं तो मैं ट्रीटमेंट कैसे करूं? द एड ओवर गेट्स ओवर हियर इट्स. सो द एड मतलब छोटे बच्चे को नहीं समझ में आएगा, but what does the ad shows is that it's a couple, so obviously if the husband or whoever they are having sexual relationship, coitus हो रहा है, so if he's having some disease in terms of STDs, so what is STDs पे pubic areas या papers आना या rashes आना या apart from that painful urination या there will white discharge whatever. Okay, so obviously partner को पता चलेगा. So partner would obviously say that other partner के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं. But problem क्या पे आता है? डॉक्टर के पास जाके ये बोलेगा कैसे? वो शर्म आती, फिर awkwardness to say these things. The patient also shows the same thing and he is not trying going to the doctor. So डॉक्टर वही समझा रहा है कि अगर तुम आओगे मेरे पास सही टाइम पे, we would do the treatment and it would be curable. But अगर सिफिलिस अगर आपने प्रोलॉन्ग कर दिया and it is now beyond the control, then death is inevitable. You cannot stop.
पहले स्टेज पे क्यूरेबल है, बाद में नहीं. But the AIDS is not curable. Second, and वहां पे थोड़ा अंडरस्टैंड और एक चीज करना है. वॉट्स लिखा है वायरल इन्फेक्शन. So वॉट्स इज नॉट ऑलवेज एसटीडीज. एक्चुअली ट्रांसमिटेड का एक पार्ट है, पर जरूरी नहीं कि वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से हो. It can occur to any one of us. Okay, by just coming in contact with the patient के हटावे या यूज थिंग्स वगैरह उससे, समथिंग लाइक अपना होता है ना वो चिकन बॉक्स से, तो उस तरह से इट कैन कम टू यू आल्सो. सो इट इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. नो. Okay, gonorrhea, syphilis, yes, sexually transmitted disease. Out of that, AIDS is, I think everybody knows, HIV, 9th standard में पढ़ा. Prevention to avoid this infection, some extent condom can be used to cover the penis during sexual act, is during the coitus. Okay, next is population control. उसमें से अपने को सिर्फ का एक point important है. It is said that the Indian population doubles every 35 years. So आपने लिखा है. Currently the human population doubling, not Indian, the entire world population. तो ये ICSE के बुक में भी लिखा है. I think almost मैं 15 साल से यूटी में हूँ, तो 15 साल में भी वही लिखा हुआ है. Okay? तो 15 साल पहले भी 35 years ही है, अभी के इसमें 35 years भी लिखा है. Okay? But with the way it is going, अगर ये कम हो गया तो प्रॉब्लम होगा. नहीं, कम नहीं होगा, it would slightly increase. Reason because no doubt the advancement has taken place simultaneously. आज की डेट में हम दो हमारा एक, पहले हम दो हमारी क्रिकेट टीम होती. अब एक बच्चा हो गया, कभी माँ बाप के पूरे निकाल सकता है. तो वो 2 का तो और 10 का तो सुसाइड ही कर देंगे. थोड़ा कम होगा, पर यस, डबलिंग रेट शायद मे बी रिड्यूस आल्सो. तो सोचो अगर 35 का 25 पे आ गया, so by the time you come to 25 years, the world population would have doubled. मतलब आपका कंपटीशन डबल हो गया, मतलब आपके सीट्स कम हो गए 50%. What you can interpret in any way you want. You know, that's the major problem. और इंडिया में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम. अगर अपना इंडिया का मोटो भी था कि हम लोग हमारी पूरी करों से 100, पहला 100 का एग्जांपल है. That's the problem where it is. So इंडियंस में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है बच्चा भगवान की देन. Okay, तो जितना है अच्छी बात है. दूसरा, हर एक घर में चिराग दिया, हेलोजन, ट्यूबलाइट्स, ये चाहिए ही चाहिए. Okay, लड़की पराया धन, लड़का अपना ब्लैंक चेक. सच बात है कि तुम में से कितने जन शादी करोगे, मतलब बड़ा सा अमाउंट डाउरी में, और लड़कियां के हस्बैंड मतलब माँ बाप देते भी. सो आई हैव सीन मेनी ऑफ देम, डाउरी देते हैं और सब कुछ, और पढ़े लिखे लोग नहीं देते. ये भी इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट जो पढ़े लिखे नहीं होते वो कम से कम अंडरस्टैंड करते हैं. पढ़े लिखे बॉयज होते हैं तो ज्यादा है. Okay, so now contraceptive methods. What are contraceptive methods? All those methods which helps to stop or prevent the fertilization process, meeting of the egg and the ovum. इसमें अगर देखोगे मैकेनिकल, केमिकल एंड सर्जिकल मेथड, शायद इसमें तो देखना स्लाइड पे डाल देगा सिर्फ दिखाने के लिए. ये अपने देख लिया था, कंपैरिजन दिया था कॉन्सेप्ट के आसपास. फिर दिस इज द प्रेगनेंसी टेस्ट. दिस इज सिंगल लाइन जो ऑलरेडी होता है. अगर यूं डाला, यहाँ पे रेड लाइन आया, दैट इज अ पॉजिटिव, अगर नहीं तो नेगेटिव. अगेन द सेम डायग्राम जो यहाँ पे लिखा है वही है. प्लास्टोसिस, उसके बाद एम्ब्रियो, एंड देन fetus, sperm, okay, amnion and amniotic fluid, gestation and parturition,
That is the baby is born, etc. Contraceptive methods में चल शायद होगा ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है मैकेनिकल बैरियर्स व्हाट आर मैकेनिकल बैरियर्स दे आर द वन which mechanically physically stop the meeting of the ovum and the sperms इनमें से आता है आपका सर पिछले बार सर जब इसका केस आता है फिर अगर फिटनेस अच्छे से कुछ प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से क्या दूसरा डेवलपमेंट रुक जाता है कि it depends क्या whether they are joined or whether they are not joined whether it is individual the individual है so it can happen one may die one may not die one may be abnormal one may be not it entirely depends upon its growth okay so twins के बारे में जो आप एक स्लाइड थी पहले इसमें देखा होगा क्या twins are paternal twins मतलब they are और we say fraternal and paternal मतलब एक they are identical twins और एक होते हैं non identical identical twins हमेशा boy boy girl girl ही होते हैं because zygote एक ही बनता है and then zygote divides to form two zygote तो दो इसमें डिवाइड होते हैं तो जब zygote बना उसको एक ही sperm ने fertilize किया sperm either X होगा या इधर Y होगा तो उस केस में अगर sperm X है तो पहला zygote क्या बना लड़की बनी और बाद में वो डिवाइड हुआ तो लड़की डिवाइड होगी ना लड़की से लड़का तो आ नहीं सकता सो ट्विंस बनेंगे but they would be identical because same zygote से तो एकदम शक्ल सूरत सब कुछ सेम नॉन आइडेंटिकल क्या हो गया है एट अ टाइम दो एग रिलीज होते और दोनों एग को फर्टिलाइज किया गया दो डिफरेंट सेल्स तो एक एक्स फॉर्म होता है एक वाई होता है या दोनों एक्स होते हैं दोनों वाई होता है पर अगर अलग दिख रहे हैं तो इट इज डेफिनेटली नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो दो अलग एग से बने ओके दैट इज नॉन आइडेंटिकल उसके बाद अगर आपने देखा होगा अपने ट्रिपलेट्स क्वाड्राप्लेट्स ब्ला 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 वो कॉम्बिनेशन में आता है एक दो में डिवाइड होगा दूसरा एक ही मिलेगा या दो 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 में डिवाइड हो गया या दो चार में डिवाइड हो गया तो वो कॉम्बिनेशंस आर वेरी रेयर पर ये हो सकता है so that's a part of now so in terms of contraceptive methods में you can see in this diagram but mechanical barrier में आता है condoms male condoms and female condoms I don't know how many of you condom word सुना होगा definitely female condom शायद पहली बार सुना होगा there are female condoms also available and there are also male condoms available now technically speaking they are nothing but a rubber tubes which are either worn by a male on the penis or inserted into the female vagina wherein it stops the meeting of the sperm and the ovum is it clear now अपने यहाँ पे कॉन्डम वर्ड बोलना भी टैब हो जाता है घर पे कॉन्डम वर्ड बोल दो there would be a huge reaction okay and then और एक कॉन्डम आता है क्या this is more cheap as such but again the usage of condom etc is more nowadays used but male condoms because till date बहुत कम लोग को पता है कि फीमेल condoms it is more of the male condoms so mechanical में condoms और female condoms इसके अलावा mechanical में आता है is your diaphragm or what we say as cervical caps ये भी mechanical में आता है you can see a cap like a tube like structure diaphragm is a rubber sheet again inserted into the female vagina same like the condoms cervical caps exactly same like this but it's a silicone material which is inserted into the female cervix थोड़ा अंदर की तरफ जाता है दोनों में these are non reusable ये reusable so once used removed out washed and again can be used
That is what the difference in mechanical barrier. Am I clear? पहला समझना होगा mechanical barriers. Then mechanical barriers protects you from sexually transmitted diseases. It protects us from the meeting of the sperm and ovum, but is not 100% safe. Reason, during the coitus, there is always a chances of condom getting ruptured. So here risk to hoga hi, and if the condom get ruptured and some amount of fluid also gets into the female tribe, can lead to baby formation because 3 idiots में एक sperm काफी होता है बच्चा पैदा करने. अगर एक drop भी गया semen का, that single drop can have millions of sperm. So then also the baby can be formed. Am I clear? Next is second method. Second method क्या लिखा है? Chemical method. Now chemical method में चिन्ह आ जाता है is first सबसे common आता है वो है pills, hormonal pills. उसके बाद वहाँ पे डायग्राम पहला स्लाइड hormonal pills का था. So here oral contraception, then we have contraceptive injection, then we have contraceptive patch, then we have the calendar. आपको इसमें implant. Okay, ये जो methods है implant, then contraceptive patch, then the hormonal ring, oral contraception, and contraceptive injection are all are chemical methods. Sir, आपके बुक में सिर्फ oral contraception लिखा हुआ है. Pills में 2 categories होते हैं. एक hormonal pills होते हैं. उसके अंदर there is something known as oral contraceptive pills and vaginal contraceptive pills. Oral नाम से पता चलता है. एक tablet like अपन जैसे medicine लेते हैं. The vaginal contraceptive nothing but again a tablet but injected in the into the vaginal part. So it is inserted into the vagina where it will dissolve and bring about the same effect. Okay. So इनका एक side effect का ज़्यादा problem होता है. This contraceptive pills जो भी होते हैं, they are all the hormonal combinations. So when you are taking it on a regular basis, because इसको regular लेना होता है. Every day this pill has to be taken for 25 days except the 5 days of menses. तो 5 दिन तो के every day आपको लेना है. And आपने हर दिन hormonal combination दिया होगा. So for some of the ladies, not some, majority of the ladies, आगे जाके hormonal disbalance दिखाई दे. Okay, so मतलब बहुत सारे ladies going for this method, this nightly fever, मतलब ये use करते थे, but not a better recommended option because उस time पे ये कोई available नहीं था. उस time पे सिर्फ यही available method. And India surprisingly अगर आपको 12th में पढ़ोगे या बाहर या तो India is surprisingly the first country in the world to adopt family plan in 1953. हमसे बहुत बाद बाकी कंट्रीज ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट की. 1953 में जब हमने अडॉप्ट किया था 51 सॉरी, अब इट वाज अंडर द प्रोग्राम दैट इज रूरल चाइल्ड हेल्थ केयर डेवलपमेंट प्रोग्राम. 51 से लेके 2022 तक हम उसको अचीव ही कर रहे हैं. प्रोग्राम सिर्फ नाम के लिए रह गया. हाँ, देयर वाज अ बेटर ऑप्शन. एक चीज हुआ चेंज प्रोग्राम जब वो लॉन्च किया था, शायद उन्होंने कहा था छोटा परिवार सुखी परिवार. उसके बाद आया हम दो हमारे दो. उसके बाद हम दो हमारा एक. हमारे अगला जनरेशन तुम्हारे जनरेशन में गवर्नमेंट ने ना बोले क्या हम दो और बस तुम ही दो. That's the part. Oral contraception methods. So hormonal pills and that is oral as well as the vagina. मतलब इसमें और एक बात, okay, which is a common oral contraceptive pill जो सुना है. इतने शरीफ हो नहीं जितना बता रहे हो. नाम बता देना. Good. Never. Okay. The most common pill which is heard about is I do not write this again. Okay. So ये हम जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो. Okay. The category of this is contraceptive pill
but the higher category known as emergency contraceptive pill or 72 hours contraceptive pill. So दोनों में difference है. तो हम पढ़ रहे हैं oral contraceptive pill etc. ये every day लेना हो, okay, and before the coitus. ये कब लेते हैं? When a lady has undergone coitus and it was without any protection. I hope you understand, without any protection. So अब उसके मन में डर है, अरे शायद मैं pregnant हो गई तो. So within 72 hours of the coitus, this pill need to be taken. Then that is an emergency contraceptive. And here we really need to understand this. This is not the pill which is recommended because we do not want any girl to enter into the stage जहाँ पे उसको बिना prescription से ये medicine मिल जाता है. You go to a chemist से मुझे चाहिए, वो आपको दे देगा. Because it is not a banned product, तो वो आराम से दे देगा. किसी को भी दे देगा. अब अगर second is medicine without anybody consent, माँ बाप को नहीं पता है. मतलब what is the thing? She is not pregnant, she is not married. Okay, obviously college going लड़की है. Just उसको मार्क मतलब knowledge है कि हाँ ये खाने से pregnancy नहीं होगी. But she doesn't have a knowledge. तो वो पिल उसके लिए सूट कर रही है. What amount, कितना dose, ये वो नहीं बता सकती, वो सिर्फ डॉक्टर बता सकते. Then what happens is, and she takes the pill 72 hours के अंदर अपने पिल ले लिया. Immediately after the pill, within 2 or 3 days में there would be menses on. मतलब pregnancy तो नहीं होगी. Okay, अगर ये menses आपने unnatural create किया, is it naturally occurring? No, आपने forcefully किया. जब मैंने told forcefully, this heavy bleeding occurring. वे कभी कभार medicine का side effect में can even too much bleeding can be fatal for. Fatal word use कर रहा हूँ, मतलब can lead to death. अगर doctor is in the right position, कितना dosage क्या करना है. Here, so we are not going to this part. लिखते नहीं है, and we try never to do anything which leads to this part. So contraceptive methods, उसके बाद चलेंगे. Surgical की, अब surgical और chemical के बीच में there is a new method which is coming under a technique known as intrauterine devices, IUDs. Now what are IUDs? What are lecture 6:20, 6:15. Okay, now what are IUDs? IUDs are nothing but intrauterine devices. अब chemical part में चलन जो आपके बुक में नहीं है, बता रहा एक लाइन पे. Contraceptive injections, implants, contraceptive patch, okay, hormonal ring, ये सब chemical methods है. आपने ये देखा होगा contraceptive patch. मैं contraceptive patch इसलिए नहीं बोल रहा, तो ऐसे ही आजकल आता है जो sedative patch, पेन किलर के पैचेस आते हैं. अगर कोई अपना बड़ा ऑपरेशन वगैरह हो गया, तो आपको 12 बार इंजेक्शन मिल सकता है, वो पैच लगा देते हैं, and that will slowly release it from that part. So contraceptive pill भी वही कर रहा है, आपकी बॉडी पे लगाया जाता है, तो जिससे वो पिल्स का इफेक्ट है, वही वो इससे रिलीज कर रहा है. Same goes for injectables. इसका साइड इफेक्ट होता है, इनका भी साइड इफेक्ट होगा, पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हर दिन लेना है, भूल गई तो भूल जाना मेडिसिन. ये बेटर रिकमेंडेड है, बिकॉज इसमें एक ही बार लेना है. नाइटिंग इस फंक्शन को 1 मंथ है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, 1 मंथ तक ये फंक्शन. 1 मंथ का एक इंजेक्शन ले लिया, डन. उससे बेटर है ये आज की डेट इम्प्लांट्स. स्मॉल इम्प्लांट इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली, यहाँ पे बड़े मशीन से इसको इंजेक्ट किया जाता है आपके इसमें. दिस वुड रिलीज द हार्मोन्स एट स्लो एंड स्टेडी पेस. ये शायद 3 months तक काम है. That is what we say as implants. So इसमें hormonal ring inserted into the vaginal part, again it releases the chemical. But in सब में the best option nowadays जो recommend किया जाता है वो ये है uterine intra-devices या intra-uterine devices. Shape वही है जो diagram में दिखाई दे रहा है, UID. It is almost a T-shaped structure. Okay, इसका सिंपल एग्जांपल जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, कॉपर टी लो, CUT लिखते वक्त ऐसे लिखा है CUT.
Okay, CU stands for copper T loop. So copper T loop. Now, what is this copper T loop, and what are the pros and cons of this? So, सबसे पहला, this copper T tube has one disadvantage, two disadvantages. पहला, it is interfering with the privacy of the person. मतलब इन condoms वगैरह में आपने जाके मार्केट से खरीदा, सीधा यूज कर लिया. Nobody is aware कि आपने क्या किया नहीं किया. It's your own choice. This cannot be used by your own choice. मार्केट से लाया, यूज किया, ऐसा नहीं. You need to go to a doctor, medical profession, and get it inserted into the female uterus. एक छोटा प्रोसीजर होता है 5-10 मिनट का, and the doctor will introduce into the uterus part. So कहीं ना कहीं the patient needs to go to a doctor and get it inserted. Am I clear? Second, may not be suited for everybody. One inserted, कई female, again probability is less, but still एक परसेंट फीमेल्स में देखा जाता है कि उसके बॉडी में इचिंग होती है, means that content is not suited for your body. ये एक नेगेटिव पार्ट है, but it's very less. But maximum advantages are there. Now, what is the advantage? One inserted into the body, it's का principal effect जो एक्शन होता है, जो आपके लिए नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ. Moment I introduce into the body, आपके ये आपका वजाइनल पार्ट, तो वजाइनल पार्ट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो यहाँ पे चला, इट स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीजेस कॉपर आयंस. जो कॉपर की लूप है वो कॉपर आयन रिलीज. कॉपर आयन सप्रेसेस द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म. मतलब क्या? वो नहीं करने से स्लो कर, व्हेन आई से इट स्टॉप्स द फर्टिलाइजेशन. नो, जब मतलब 100 की स्पीड पे स्लो डाउन के 50 पे आ गया, और एक स्लो डाउन करके एक 50 पे, वो स्लो डाउन करके 5 पे आ गया, तो 5 वाला नहीं पहुंचेगा, पर 50 वाला पहुंचने की चांसेस है. तो ना ये फर्टिलाइजेशन को स्टॉप नहीं करता, पर बिकॉज़ इट स्लो डाउन द स्पर्म, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग इज लेस. बिकॉज़ 500 थे, 500 में से सिर्फ 100 स्पर्म पास थे, बाकी ऑलरेडी स्लो थे, तो स्लो को और स्लो कर दिया, वो पहुंचते पहुंचते मर जाएंगे. 100 में से उनका स्पीड कम कर दिया, 100 में से 50 नहीं पहुंचेंगे, 50 तो पहुंचेंगे. एक वो प्रोबेबिलिटी को कम कर रहा है मीटिंग टू द. सेकंड, दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन. तो वो कॉपर रिलीज कर रहा है, साथ में हार्मोनल पार्ट भी रिलीज कर रहा है, व्हिच मेक्स द यूट्राइन वॉल hostile for implantation. तो अगर वो 50 स्पर्म में से एक आध नमूना जाके मिड भी हो गया और ब्लास्टोसिस बन भी गया, तो वो इम्प्लांट नहीं कर पाए. इम्प्लांट नहीं हुआ मतलब क्या? नो प्रेगनेंसी. सो दैट इज व्हाट कॉपर टी लूप. एडवांटेज, वंस इंसर्टेड, मार्केट में 2-3 टाइप के अवेलेबल है. आई थिंक 2 टाइप है, एक 3 इयर्स और एक 5 इयर्स. मतलब एक बार डाला 3 साल तक कोई अदर मेथड यूज करने की जरूरत, या 5 साल तक कोई. When suppose the girl has put it today, next 2 year तक उसने कोई भी मेथड यूज नहीं किया, फाइन. और 2 साल के बाद उसको लगता है नहीं अब मुझे बच्चा चाहिए, goes back to doctor, get it removed, everything becomes normal. Okay, but conditions apply. Now, what is the condition applied? Then जब भी कुछ नया चीज इंट्रोड्यूस करना होता है, there are a lot of FAQs ना, वैसे गर्ल्स के भी होते हैं. अगर इंसर्ट करेंगे तो मेंसेस स्टॉप हो जाएगी. दूसरा, मेंसेस चालू हुआ तो मेंसेस के साथ में ये भी बाहर निकल के आएगा. कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. नथिंग ऑफ दिस ऑकर्स. मेंसेस नॉर्मली कंटिन्यू करते हैं, द फ्लो आल्सो टेक्स प्लेस, ये बाहर नहीं निकलता. सो फर्स्ट द लेडी हैज टू कंडीशन, डॉक्टर्स को समझाते हैं भाई ये कैसा कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारे माइंड में जा रहा है, एंड एवरीथिंग इज गुड. क्लियर विद दिस? Shall I go ahead? Last method is surgical method. Surgical method means tubectomy and vasectomy. Coital intercourse वगैरह नहीं पढ़ा रहा के लेवल पे नहीं. Surgical method is okay. इसमें chemical method में और एक है आपके spermidal gels and spermidal foams. तो ये diaphragm है, diaphragm के end के यहाँ पे they apply spermidal gels or spermidal foams. जेली एक्शन से लगाया जाता है. नॉर्मली बहुत कम जन ये यूज करते हैं,
because everybody is not comfortable applying gels or creams near the pubic or that area. So used, but very rare. Cervical caps fitted into the cervix part. This is the surgical method. Diagram में जो दिया गया है वो है tubectomy. Tube comes from the word fallopian tube. So it's a non-reversible method. Okay? अब चलन जो मैंने पढ़ा था अभी अगर इंप्रूवमेंट हुआ रहेगा और रिवर्स होता है तो ठीक है, पर जो हमने पढ़ा था वो नॉन रिवर्सल था. Fallopian tube, both the fallopian tubes are cut and the ends are ligated, seal कर दिया है. Okay? Again, the most advantage method, but lot of counseling needs to be done for this because प्रीवियस में वही क्वेश्चन होते हैं. अगर मैं ये करूंगी तो मेरे मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे, मतलब मेरा मेनोपॉज चल गया आएगा. No, cutting this will not stop her menses. Her menses continues normal as it will continue. She would undergo menopause जब उसको जाना है तब. What is happening? Only the egg release जो होता है वो यहाँ पे आपके स्टॉप हो जाएगा and lysosomes will clean it off. और hormones यहाँ पे स्प्लिट होते हैं, वो तो ब्लड से जाएंगे ना पूरे बॉडी में. So why have blood come to the uterus part? Uterus thickening होती है, जब हार्मोन लेवल कम हो जाता है, uterus part breaks. So everything is normal. Nothing would stop in this part, but completely non-reversible. So best option. इसमें कोई chances नहीं ifs and buts के होंगे. जब ब्रीजिंग खत्म कर दिया आपने, तो एक जाएगा कैसे या स्पर्म बचेगा कैसे? That is why tubectomy. अगर मेल्स में किया जाता है, तो it is known as vasectomy. The sperm duct is cut, and same thing. Semen would be released, but without sperms. Then again, अफसोस कि हम इंडिया में रहते हैं, कि जहाँ पे male dominating society. First thing, war goes between the family. घर पे करेगा कौन? लड़का या लड़की? Husband या wife? It is 90% point that is always the female who does it, not the husband. Reason? भले बोलने के लिए कुछ भी reason हो, but first reason is this: the male always have a back of the mind डरता है कि अगर मैं ये करूँगा तो I would become impotent. Okay, there would be no sexual erection taking place in my penile. वो उस psychology में चला जाता है unless he is educated to know about all this. So has nothing to do with the penis erection से लेके semen वगैरह. Semen would be released, sexual arousal will take place, everything would be normal. सिर्फ को समझना है कि it is like a firing a bullet without gunpowder. So it's the semen release but without. Then comes one is लास्ट, उसके अंदर लास्ट में देखना ये डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, तो वहां पे MTP देखो किधर लिखा हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. So MTP is not a part of contraceptive method. ये याद और वो एक्सप्लेन करते हैं because it is not a part of contraceptive method, but it's a way to abort a child. When the parents are not willing to have the child, mother is not willing to have a child, or due to genetical disorder, or due to sexual abuse, कभी कभार रेप केसेस में बच्चा होता है, उसको नहीं चाहिए, then also it can be avoided. And as per the Indian law, okay, for abortion to be done, the lady doesn't require the sign of her husband. Okay, she can walk into any hospital and do the operation on its own. That is her sole right. तो बच्चा होना नहीं होना ये उसका है, husband का right नहीं. Okay, so that's one thing. Second thing, what is the legal time period for abortion? कितने month तक abortion allow किया जाता है? बोलो. 3 months. Sure. Good. देखना आप लिख कर नहीं. No. Initially it was 3 months. Now it is 5 months, and we are still fighting for it. हम उसको और आगे बढ़ना चाहते हैं. We are almost trying to bring it to 6 or 7 months. Okay. Then up. क्या?
इट इज इम्पोर्टेंट। एक चीज सबसे बड़ी याद है, हमने ऑलमोस्ट 10-15 साल तक केस फाइट की है फॉर इंक्रीजिंग फ्रॉम 3 months to 5 months। रीजन, हमारे यहाँ पे इंडिया में जो लॉ फॉलो किया आता है, तो इनिशियली आल्सो हर्ड, बहुत सारे कंट्रीज में अगेन यू हैव वेरी डिग्रीज ऑफ लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज। अगर आपको 4 या 5 मोदी सरकार जब आया, मोदी आई थिंक केम हाउ मेनी इयर्स, almost 8 to 7 years. So when he came into the picture, okay, I think immediately एक या दूसरे साल पे ही there was a big incident. कौन से country का तो याद नहीं आ रहा। Okay, we fought for that part because it is a country, it's a European country का तो Italy. Okay, and वहाँ पे abortion is not allowed at any cost. किसी भी circumstances, abortion is illegal in that country. For any reason, okay? And अचलन वहाँ पे अपने से लॉस नहीं है कि हर लॉ के पीछे इज अ बैक डोर। वहाँ पे the laws are very strict in that country, so वहाँ पे चलन abortion cannot be allowed। हमारे यहाँ पे पहला abortion 3 months था, अब 5 months। My first question is 3 months तक क्यों allowed किया, उसके ऊपर क्यों नहीं था? Good, so what is the reason? Good. And India में we do not allow mercy killing, euthanasia। सुना होगा ना? mercy killing सुना? आज घर पे जाके ना थोड़ा नेट पे सर्च करना कि euthanasia, mercy killing, और लड़की लोग ने स्पेशली सर्च करना। I'm saying लड़की लोग because search for KM nurse incident 1981. Search for that incident. 1981, I don't remember the name of that lady. It's KM or hospital mercy killing case. Then a biggest landmark history in our Indian law. A girl 81 years, a nurse by profession. She was molested by a person. Okay, a compounder ने उसको molest करने की कोशिश की, and the process of molestation, he pressed her neck, and it got entering in such a way that she went into coma. She was in coma for 20 years, I guess. Many of NGOs, many other people fought for her to give her mercy killing. So India में allowed नहीं. And the only one to be opposing that mercy killing was the hospital itself. Because 20 years they took care of that nurse without any delay or anything. She was abandoned by her family members. Everybody was abandoned her. The hospital see to it that she live her life properly. Look, in the very least, no doubt. But she died, I think, with 4-5 साल पहले. So that's again a part of mercy killing. And 3 months जब बच्चा हो जाता है, fetus जाता है, तो अपन उसको fetus बोलते हैं। इंडिया में मर्सी किलिंग मतलब वी कैन नॉट किल अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स आवर लॉ। तो इसके लिए पहले 3 मंथ का लगाओ। अब उसके बाद इट वाज फाउंड मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट बच्चे में कुछ जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटीज या कुछ डिफॉर्मिटीज लास्ट जो 4-5 महीने के आसपास जो स्कैन किया था उसमें भी पता चला। मतलब इनिशियल स्कैन में कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होता, फिर 4th और 5th मंथ इसमें स्कैन में पता चला कि बच्चे को एब्नॉर्मल है। As a parent, do you really think to have a child like this? नहीं ना? So imagine a child, spinal bifida ऐसे कुछ disorders होते हैं, rare disorder. जहाँ पे बच्चे का spinal cord 2 पार्ट में डिवाइड होता है, and he would be living a very miserable life, something like जैसे आपका मैंने हाथ काट दिया और आपको ऐसे बखा, आपको कितना पेन होगा? वो नॉर्मल पेन वो बच्चे को होगा, उसको सिर्फ इंजेक्शन दे दे के वो पेन को सिर्फ सबसाइड कर रहे हैं। मैं जीरो नहीं बोल रहा, कम कर, मतलब ऐसे हाथ काटने के बाद पेन होगा, वो पेन कम होके इसके हाथ पर मैंने पैर रख दिया, उतना दर्द तो होगा ही होगा। मैंने पैर रख दिया तो कितना दर्द होगा सोच सकते हो। हाँ, उससे तो कम होगा पर ये भी तो पेन ही होगा। एंड एज अ पेरेंट डू यू थिंक यू विल सी योर चाइल्ड who is just 1 day born और सिर्फ इंजेक्शन दिया है? Nobody wants it. But then law या नेट पे जाके देखना how many patients
are still waiting for mercy killing in India. क्यों जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में mercy killing ना हो, हमारे में नहीं. उसके अपने positives और negatives है, no doubt about it, but still we don't allow it. So that's a part of it. Am I clear? So उसके लिए 5 month क्यों गया? Reason again there was a lady, उसका बच्चे में abnormality थी, fought for the case in the Supreme Court. और तब बहुत सारी दुनिया में प्रॉब्लम था, so बहुत सारे medical fraternities ने support किया, and ultimately she won the case, and then it was changed to 5 months. because बहुत सारे countries में 5 months और अभी 6-7 month तक भी पहुंच गए. तो abnormality का last में पता चला, तो it can. हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे in terms of abortion, the abortion is risky for the baby as well as for the mother. तो 6 months 7 months पे जाओगे तो मम्मी के लिए रिस्क रहता है, पर 5 months उसके नीचे होगा तो it is not a problem. And that is how we believe also. चल घर पे अगर आपके, I don't know how many of you have observed this, पर बहुत सारे घरों में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है वो 3 महीने तक बोला नहीं जाता क्या वो प्रेग्नेंट है. नहीं, it's a basically a belief. Okay, there is a lady X, okay, उसकी मम्मी होगी, अभी तो प्रेग्नेंट होता, इसको बोलेंगे, हस्बैंड को पता है, मम्मी डैडी को पता है, बस. नॉट टू फ्रेंड विन को नहीं बुलाता, 3 महीने से प्रेग्नेंट है. अब सिंपल बिलीफ है ना, मॉडर्न गर्ल है, प्रेग्नेंट है, सबको बोलेंगे फ्रेंड विन को. ये मम्मी बोलती है, तुझे बोला था नहीं मम्मी की, अभी बोल. मम्मी कौन से जमाने में कुछ नहीं बोल. Now they have their own logic. I don't know, but उनका क्या कहना है, क्या 3 महीने के पहले बोला, 3 महीने में फिटनेस नहीं हुआ, so it is more of risk of abortions. Okay, अब उस केस में मान लो बैड लक दैट योर चाइल्ड गॉट अबॉर्टेड. Okay, तो अब ब्लेम किस पे जाता है, वो लेडी भी देगा. अगर सास ससुर खड़ूस एकदम खड़ूस होंगे तो उसको बोला था ना, पर पूरा ब्लेम लड़की पे. दूसरा, दे आर गुड इनफ, बट लड़की के बैक ऑफ द माइंड में जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो गई उसके बैक ऑफ द माइंड पे करेगा, मम्मी डैडी ने बोला था नहीं. मुझे बहुत ज्यादा शौक था, सबको बोल दिया. अब विल शी थिंक फॉर सेकंड टाइम, बोलने के पहले सोचेंगे ना, अगर मैं नहीं बोलूंगा क्या फर्क पड़ता, कोई बड़ा पहाड़ आने वाला है. शी वो बोली चलती है, मम्मी डैडी का नेक्स्ट पर्सन देती, शी डजंट से, and luckily her things was proper. उसके अंदर वही फीलिंग वापस हमने कंफर्म कर दी. जब वो साथ बनेगी वही चीज आगे पास. पर पहले 3 महीने में इट्स ओनली द प्रोबेबिलिटीज आए, पर हम उसको बोलते नजर लगती है कि ये है वो है, कि किसी को जलन होती है, इसको आपको पता चल गया उनको, कोई she would say something curse you, and उससे बच्चे का होगा. It's one thing, but हुआ तो no issue. पर अगर बच्चा अबॉर्ट हुआ तो then it creates a problem, and then the superstitions continue. So this is all about because of the pregnancy का first thing. उसके बाद तो fetus बन जाता है तो कोई issue नहीं. That officially completes the chapter. Now, then we have 5 minutes to go. Dosages. I have one more lecture still left in the next coming week maybe. जब भी है. So now your choice. End the lecture today itself, or you want to continue the lecture for any doubts, question answers, what they want. You decide. आपके पास 5 मिनट है आपस में मीटिंग करके डिसाइड करने के लिए. वरना मेरी तरफ से आई एम डन. मैंने शायद ये भी एक्सप्लेन कर दिया था शॉर्ट में, अपन ने आवर एनवायरनमेंट कुछ कर दिया. आपके पास 5 मिनट डिस्कस कर. ऑनलाइन चैनल तुम्हारे पास भी 5 मिनट है डिस्कस करने के लिए. अगला लेक्चर चाहिए
या नहीं चाहिए? तो 5 मिनट बाकी है. The child which is born, के उसके बाजू में is a fluid, जिसको knowledge हम बता रहा. That fluid जो created हुआ ना, the water bag burst, ये है वो water bag. के amniotic fluid, higher stages पे इसी amnion को निकाला जाता है via injection, and इसको बोलते हैं amniocentesis. ये allowed है, it is legally allowed. ये fluid को test किया जाता है, amniocentesis is a test name for identifying genetical abnormalities. Okay, अपने आप पे हर चीज का wrong side होता है. Can be disused or misused for identifying the sex of the child. डॉक्टर देता नहीं आज की डेट में, अलग है, उसने दिया, you can be behind the bus, but still, okay, so that fluid is there to identify whether it has genetic abnormalities. जो स्कैन में नहीं होते वो इससे पता चले. Next, yolk sac, there is 4 part. एक होता है yolk sac, एक होता है amnion, एक होता है chorion, एक होता है allantois. Yolk sac हमारे में बहुत कम होता है. The part which is responsible for nourishment to the baby. हमें बहुत कम है because हमारा nourishment मम्मी से आता है. तो अंडे में yolk होता है, वैसे ये होता है. Amnion और chorion. Amnion amniotic fluid जो बाजू में बन जाता है. Chorion जो होता है, chorion amnion along with that forms the placenta. Chorionic gonadotropin hormone. Chorion. That's spelling normally correct. Chorion. ION. Chorionic ION. Okay. So chorionic gonadotropin hormone. Spelling change करना. Allantois कचरे का डब्बा. Okay. एक बैग में चित्र होता है allantois. So when the fetus is formed, उसका जो waste निकलता है, that will be deposited into this bag. And when the baby is being born out parturition, तो बहुत कुछ बाहर फेंका जाता है. Along with that, allantois also is expelled out. Twins, identical and non-identical. एक egg से 2 part हुआ तो ये identical. तो अलग-अलग eggs है, उनसे बना तो ये non-identical. Triplets, quadruplets and many more. You can see twins. मतलब एक egg से 2 बने. अब यहाँ पे एक egg 2 में divide हुआ, ये वापस 2 में divide हुआ. ऐसे permutations and combinations में बहुत कुछ हो सकता है. आपके लिए फिलहाल जरूरत नहीं. क्या? 99% same except DNA fingerprinting and everything. It can be resembling same, not in terms of blood group, not in terms of your DNA fingerprint, not in terms of your fingerprints, iris scan, ये सब अलग ही होते हैं. और सबसे बड़ा होता है behavior. एक normally North Pole निकलता है, दूसरा South Pole ही निकलेगा. Test tube baby, okay, I think introduced in 1980, 91 में, 91 या 96 में introduce किया था इंडिया में. KM हॉस्पिटल में फर्स्ट था शायद से. टेस्ट ट्यूब बेबी में जब मेरे टाइम पे पहली बार आया था ये टेस्ट ट्यूब बेबी 10 स्टैंडर्ड में. तब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा बच्चा टेस्ट ट्यूब में पैदा होता है. Okay, that was what my thinking was. तो हमारे टाइम में चैप्टर भी नहीं था ये. But later on I realized that test tube baby is nothing but the egg and the sperm is fertilized outside in the lab and then the zygote is introduced into the bone of the womb. तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है. इसमें आता है सेकंड स्टेप सरोगेटिव मेथड. मतलब हस्बैंड वाइफ का स्पर्म और एग लिया, फर्टिलाइज किया, उसी के बॉडी में डाला, वो टेस्ट ट्यूब बेबी. हस्बैंड का निकाला, वाइफ का निकाला, बिकॉज ऑफ सम रीजन शी इज नॉट एबल टू कंसीव, तो उसका जो जाइगोट है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अनदर लेडी. शी इज अ रेंटेड वूम. आई होप रेंटेड वूम समझ में आता है. मतलब बच्चा किसी और का है पर वो पैदा किसी और में होता है, तो उसको बोलते हैं सरोगेटिव मदर. The first test tube baby born in July 25, 1978,
और उसके बाद आई थिंक इमीडिएटली इंडिया में फर्स्ट इंडिया's first and world's second test tube baby at 40th happiest birthday, born in 1978, नवरात्रि. चलन यहाँ पे think about it. July 25, 1970. August, September, October 1978. जब देखा जाए तो 3 महीने का डिफरेंस. देखा जाए तो उनका प्रोसेस जो किया होगा वो समवेयर 1-2 महीने के डिफरेंस में ही होगा. एंड दैट इज वेरी गुड थिंग अबाउट इट इज हम दुनिया के पीछे नहीं है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. इनफैक्ट दुनिया में जहां पे भी साइंटिफिक नॉलेज है इट इज बिकॉज ऑफ द इंडियंस. सो वी शुड बी प्राउड अबाउट इट. हम इंडियंस का ही दिमाग सब जगह यूज होता है. और वो दूसरी जगह पे यूज होता है, अपनी देश में नहीं होता. दैट्स ऑल अबाउट इट. आई थिंक चलो wind up and leave. Online children, by the way, उन्हें बताया नहीं मुझको क्या करना है. अरे नेक्स्ट लेक्चर चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना. बाद में अगर बोला ना एक अकेले के लिए नहीं रखूंगा. जल्दी सर रख सकते हो. क्योंकि सर अभी पढ़े थे तब डाउट आता है.